Hello everyone, welcome back to the channel. This is 003 from IIT Delhi. सो आज मेरा 9 से 10 मॉर्निंग में क्लास था और क्लास करके आज हमारे कॉलेज में सुनीता विलियम्स मैम आने वाली हैं लेक्चर के लिए। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, मेरे को भी करवाना था, लेकिन 15 ऑफ जैन इसका लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, मैं करवा नहीं पाया। सो अभी मैं लेक्चर हॉल से निकल रहा हूँ और होपफुली मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, ठीक है। लेकिन 1 घंटे का टाइम है अभी हमारे पास, तो इनका लेक्चर 11 से स्टार्ट है और अभी 10:15 हो रहा है, 10:15 के आसपास हो रहे हैं। तो इनका लेक्चर ये डोगरा हॉल में होने वाला है IIT दिल्ली में। तो लेकिन 15 जनवरी को रजिस्ट्रेशन था जो कि मैं करवा नहीं पाया, कुछ मतलब पता नहीं क्यों नहीं करवा पाया, मतलब मेरे पास टाइम नहीं बचा, लेकिन मैं लेक्चर देखना चाहता हूँ कैसे भी। अब तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि विदाउट पास एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा फ़ोन भी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है और ये कभी भी धोखा दे सकता है मुझे, मतलब ये ऑफ हो सकता है। तो अब वो तो जाने के बाद पता चलता है। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ डोगरा हॉल और देखते हैं कि क्या होता है। प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, जो जिस गेट से मैंने एंट्री लिया वो स्टूडेंट के लिए नहीं था। जो फैकल्टीज़ मेंबर और जो लोग हैं वो इस गेट से जा सकते हैं डोगरा हॉल। और हमें बताया गया कि आपको जो पीछे साइड जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उस गेट से हमें एंट्री लेनी है। तो मैं अब जा रहा हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी के साइड में डोगरा हॉल, जहाँ से जो स्टूडेंट है वो इस लेक्चर के लिए एंट्री ले सकते हैं। सो देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। एक्चुअली मेरे को तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने भीड़ देखा, भाई साहब बहुत लोग यहाँ लाइन पे खड़े थे। और मैंने जब पूछा, मैंने काउंटर पे जाकर मैंने पता किया कि मेरे पास एंट्री पास नहीं है, मेरे को एंट्री मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे को क्या था, मैं कॉफ़ी लिया एक बगल वाले अमूल स्टोर से और फिर मैं चला गया। मतलब मैं सोचने लगा आगे का क्या प्लान किया जाए। साथ साथ मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था, तो मैं इसी दुकान पे अपना फ़ोन को चार्ज किया 10-20 मिनट और फिर मैं गया। तब तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट जो थे वो अंदर जा चुके थे। फिर मैंने पता किया तो मेरे को पता चला कि जितने पास वाले लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था इस लेक्चर के लिए, वो तो जा चुके हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट, कुछ बच्चों को ये एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसी बच्चों में से था जिनके पास नहीं था। तो फिर मैं खुश हो गया। फिर मैं लाइन पे में लगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये लेक्चर देखना ही था। सुनीता विलियम्स मैम जो है वो मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट, मतलब जो कहते हैं ना लिस्ट जो होता है लाइफ में, तो उसमें से मैम का भी नाम है मेरी लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू था, तो डोगरा हॉल जाने से पहले सारे कैंडिडेट को चेक किया गया और ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं हम लोग दौड़ते हुए क्लास के अंदर गए थे, क्योंकि 11 बजे से मैम का लेक्चर था और 11 बजने ही वाला था। तो इनफैक्ट हमारे पानी का बॉटल भी इन्होंने मतलब बाहर निकलवा दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। सो हम लोग दौड़ते हुए डोगरा हॉल पहुँचे और डोगरा हॉल पहुँचते ही जो माहौल था मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इनफैक्ट अभी बहुत सारे बच्चे मतलब आ ही रहे थे और अभी तक डोगरा हॉल मतलब पूरा फुल था, नीचे वाला तो पूरा फुल था, इसलिए हमें ऊपर बैठाया गया था। मतलब 2 फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें बोला गया था जाने को, तो हम फिर फर्स्ट फ्लोर गए थे मतलब बैठने के लिए। वहाँ जाने के बाद जो माहौल था वो बहुत ही एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव माहौल था। सारे बच्चे, मतलब हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक पर्सन कोई भी आता है तो उनको देखने के लिए एक अलग सी मतलब एक्साइटमेंट होता है स्टूडेंट के बीच में। सो बस हम सारे लोग डोगरा हॉल बस पहुँच ही गए हैं। और पहुँचने के बाद जो मतलब सीन था वो बहुत ही पॉजिटिव, और मैं मतलब बहुत ऐसा रेयर केस होता है जो इतना एनर्जेटिक चीज़ें हैं। मतलब सारे लोग मतलब कहते हैं ना वो उत्सुकता से बैठ के मतलब इंतज़ार करना मैम का। मुझे नीचे वाले फ्लोर पे बैठने का, मतलब नीचे वाला जो ग्राउंड है स्टेज के पास, वहाँ बैठने का बहुत मन था, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो अभी जितने भी लोग देख रहे हो, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ऊपर वाला फ्लोर भी ना सारा ही फुल हो जाएगा। और इसमें से मैं एक चीज़ बता दूँ, मोस्टली के पास जो पास है वो नहीं है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मिस किया है। लेकिन खैर लास्ट में एक अच्छा मतलब था
फैसला कि हम लोग को भी एंट्री मिला। एक्चुअली एक मेल आया हुआ था, उस पर आपको एंट्री मतलब पास बनवाना था, मतलब रजिस्ट्रेशन करना था। तो जितने लोग का रजिस्ट्रेशन था वो सारे नीचे बैठे हैं, आप देख सकते हो स्टेज के पास। और फिर जिनका नहीं था उनको लास्ट पे एंट्री दिया गया, और वो लास्ट में वाले सारे बच्चे आप देख रहे हो अभी आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे करके सारा ही फुल हो जाएगा ऊपर भी, ठीक है। लेकिन मैम का 11 बजे टाइमिंग था और मैम ये एग्जैक्ट पहुँच गए। I understand that all of us here know what makes this lecture so special. Just give me a cheer if you know who we have amongst us to deliver it. I think no amount of applauses can justify how excited our community has been for your conversation. But before we invite our speaker to the podium, it is essential that we take this moment to reflect on the name the series bears. A distinguished name in the world of structural engineering. Dr. B.N. Vazirani is known for his extensive work in civil and structural engineering design and education. His contributions, particularly in the areas of structural analysis and reinforced concrete design, have been instrumental in shaping the field. He authored several foundational structural engineering textbooks widely used in education across India and abroad. His work has impacted students, practitioners, and educators, establishing him as a key figure in the advancement of structural engineering knowledge and practice. This series aims to bring the world's leading scientists, explorers, researchers, and scholars to our campus, to challenge us, to inspire us, and to remind us of the that the grit and perseverance required is actually required to continue the dialogue of learning and pushing the envelope in field. And we have just the right person to get the ball rolling. It is a rare privilege, honestly, to share a room with someone who has spent so much time amongst the stars, so much so that it's more than the time we spent dreaming of them. Ms. Sunita Williams has been a beacon of excellence throughout her career. As a naval aviator, she logged 3,000 flights and more than 30 different aircrafts before joining NASA. In her early expeditions, she set the world record for total spacewalk time by a female astronaut and became the second woman in history to command the International Space Station. She also became the first person to run a marathon and complete a triathlon in space. But what cemented her legacy was her unwavering display of resilience and leadership during the Boeing crew flight test, where her initially planned stay of 8 days extended to nearly 9 months due to technical challenges. To do the honors of welcoming our distinguished keynote speaker and share his own words of wisdom, I would like to invite on stage first the director of IIT Delhi, Professor Rangan Banerjee, to the stage. On behalf of all of us here, it's indeed a great pleasure to welcome Sunita Williams. We at IIT Delhi have been involved with ISRO in various science and joint research projects for software and hardware related to the space mission. We also have a large number of 11 startups at last count, which are actually looking at technologies and hardware, whether it is optics, whether it is hydrogen propulsion for space. But we really hope that many of you in the room will actually make a career and make innovation for space. And who better to inspire us than Sunita Williams for this? So we are all looking forward to this, and I know that there are people who have not been able to get into the hall. It's a completely full Dogra hall. So it's really a delight. I'd like to thank the US Embassy for giving us this opportunity, and I'd like to welcome Sunita Williams to give her talk and then interact.
everybody. How's everyone doing today? Good morning, ma'am. There's a couple of seats now, so someone can have a seat up here. No, it's great to be here with everybody today. Amazing that the whole place is filled up. I'm just excited to be here in India, first and foremost. Secondly, of course, sharing my experience with students and some of the next generation of future. You might see the name or the word RET, retired. That means I'm getting out of the way, and then you guys have to take in village and do the job that I was doing, and that many people are working on, just like our professor mentioned. I know there's so many things going on in India, so many startups, so much engineering that's going to work its way into having humans leave low Earth orbits, and humans leave the planet and go on to bigger and better things. But there's a lot of foundation that goes into it, and part of that was the International Space Station, which has been my life for the last 20-some years. I joined NASA in 1998, and at that time, there were PowerPoint slides about how the space station was all going to be put together. And honestly, I didn't believe it was going to happen. Not only is it hard technically to do that, but we are working with all of our international partners from Russia, from Japan, from Europe, from Canada, and others to do this. And I thought, for sure, someone's going to say there's no way, we can't do it. Yes, we put our name on the paper, but no, we're not really going to follow through. But we did. Yes, it took about a decade to build the International Space Station. And if you've seen some of those PowerPoints of how it was put together, solars, extended solars, retracted, radiators, extended radiators, retracted modules moved here and there. As we were living there, we were doing science experiments until it was all built by around 2011 and 2012. And now it's an amazing laboratory. I've had the opportunity to fly in 2006 when it was one little solar array and one little laboratory. Practically 2012, when we pretty much had it all done. I'm thinking about a couple more new futuristic exploration modules or ideas that we're going to put on. And now again in 2024, thought I would only have a glimpse of it. But I got a long period of time to stay up there and hang out for a while. So it was awesome. The space station is cooking. It is doing everything it's supposed to be doing. It is the foundation for so many futuristic science projects that we're working on and technology demonstrations. And it's awesome. Unfortunately, we are probably going to be losing it in about 5 years, but that is also fortunately because that opens a new chapter, just like that retired thing there, opens a new chapter for the next generation to do even bigger and better things based on the foundation. So let me, if you don't mind, if you indulge me for about 9 minutes with a quick video, but I'm going to talk about it real quick first. Stand by. Don't play it yet. Stand by. Just to show you what's been going on. It is a very cool time in human space exploration. Even though it was met with a little bit of ups and downs, every new project will be met with ups and downs. We had 3 spacecraft, which meant 3 different rockets, 3 different spacecraft, 3 different spacesuits, 3 different software trajectories to get us to space. Then we're on the space station, different docking ports. You'll see this. And then we're coming home, and I'll talk about it again. Coming home also, 3 different ways to come home, and we'll talk about it as it gets a little bit closer. But pretty amazing time where we can contrast and compare, and also those are just some of the real quick, basic, obvious things that I'm talking about. But there's so many other Earth, and I'll explain a little as it goes on. So maybe if you can start. I don't want to get too close because we'll have to here. Last summer, or 24 summer, we had some big aurora. You'll see that. So this is a Starliner on an Atlas V rocket launching out of Florida. The Soyuz on a Soyuz rocket launching out of Kazakhstan. And then a Dragon on a Falcon 9 launching out of Florida. Starliner was first in June 2024, burying me. Then Don and his compadres out of Baikonur in September, and Rick and Alex in October. One huge engine on the left-hand side, I think about 27 engines in the center, and then of course 9 on the Falcon 9.
So 3 entirely different rockets, but they all are solving the same problem to get us to space. It's about 10 minutes where we are to the space station. And then disconnect from the spacecraft, and then the spacecraft takes a trajectory to get to the space station. About 24 hours for Starliner, about, I don't know, 6 or 7 for Soyuz, and about 25 hours for Dragon. Docking is a very good day, very good air, obviously. I wish I had that hair when I was down here, but unfortunately gravity is all around us, we can't escape it. And you can tell there's a lot of people up there. The docking port is different for the Soyuz than it is for the U.S. commercial vehicles, as Dragon and for Alex and Nick join the group. We had up to 12 of us on the space station at one time, usually 7. So the environmental control system, all the biology that goes into the food production and the food waste has to accommodate a lot of people, and did while we were up there. That's our home away from home, about the size of a football. We're constantly doing experiments, we're constantly collecting data, we're constantly trying to answer questions. Usually that leads to more questions. The focus of the question, though, is what happens when you take gravity away? Because it's such a strong force, it masks lots of the nuances in different things that behave around us, and understanding those nuances helps us understand more about ourselves as well as the universe and how we interact with it. So we look at medicines, we look at materials and making new materials, we look at how we behave so that we know how medicines might interact with us or how to counteract diseases. You name it, we're doing research on it up here. We've had opportunities to do all sorts of science, spacewalks. It's very and pretty awesome, actually, opportunity to do something different every single day. The size of opportunity happens anywhere there are people thinking about advancing our knowledge, and the same thing happens on space station. We have companies, universities, students all flying these astrobees around at different times. Some of them are actually even grabbing onto other pieces that we might have floating around, and that might help us clean up space debris. We have a tray right here that does some combustion experiments, right on the other side of which is a glove box where we've done some stem cell research as well as DNA sequencing, and there's an airlock where it can take payloads out of the space station, and those could be Earth observation satellites, they could be launchers of other microsatellites, they could be doing all sorts of amazing stuff. The mission of the space station, the scientific exploration, is something that we deeply believe in. Its ability to make a positive impact for all of humanity. So not only did we get to do a lot of science experiments, but we're living in this building, quote unquote, so things break inside and outside. We're our own IT guys, we're our own construction workers, so sometimes we have to go outside and do a spacewalk. This is a rate gyro assembly. You can see the tools that we use. We're wearing essentially big, huge gloves, so the tools also have to work in this spacesuit. Think about that for the moon as it's coming up. We're going to have suits and tools that will allow us to not only float around in space, but actually bend down and do things on the surface of the moon and then on Mars. So lots of development in this field right now for suits. We got to do 2 spacewalks. It's pretty complicated, but sometimes we do some really neat things. This one, which is actually swabbing the outside of the space station, you see that microbes actually live in space. That opens up new ideas and possibilities of thought of where other things could be living. I got to fly around on the robotic arm, and sometimes the solution is something very simple, not very complicated. We used a crowbar to actually disconnect a piece of equipment that we needed to bring back into the space station to fix it. Some of the stuff is over 20 years, and your cell phone would be obsolete. Thank you so much, ma'am, for those wonderful stories.
I'm sure all of us here would love to pick your brain for us, but we are bound by time. So I would now like to invite on stage the Associate Dean of Academic Outreach and New Initiatives, Professor Shilpi Sharma, for a fireside chat. That's a little technical apparatus here. I'm awestruck, and so are many of the others I know. This is your first visit to IIT Delhi. So tell me, how has the first impression been? I'm feeling a little overwhelmed because there's so many people and I haven't put anybody to sleep yet. मैम का लेक्चर ख़त्म हो गया और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फ़ोन था वो मिड ऑफ द सेशन ऑफ हो गया था। जैसे आपको पता था कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं था। तो खैर जो मैम का लेक्चर था वो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना मतलब जो जर्नी था, स्पेस जर्नी, उसके बारे में डिस्कशन की। उसके बाद मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि मैम का डॉग है तो डॉग के बारे में पूछा गया कि आपके मन में क्या मतलब ख्याल आता है जब आपके डॉग के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो मैम ने बताया कि उनको पीस उन्होंने आंसर दिया एक वर्ड में। फिर मैम ने एक डिस्कशन करी कि अर्थ, जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें अर्थ का इम्पोर्टेंस पता चलता है, और उन्होंने इस पर जोर दिया कि अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है और हमें एज अ कम्युनिटी यहाँ पे मिलजुल के करना चाहिए, काम करना चाहिए, रहना चाहिए, और हमें अपने बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी तक यूनिवर्स में अर्थ जैसा कोई प्लैनेट नहीं है। और उसके बाद मैम बताएं कि जो आपका अर्थ जो है, अर्थ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो मोस्टली डिस्ट्रैक्शन होता है मोस्टली उसमें से। और स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेस से जब आप जाते हो तो अपने वर्क पे फोकस करते हो और आप जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हो, लेकिन आप जो रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क है उस पर भी आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज़ नहीं होती है। एंड देन लास्ट में क्वेश्चन, मतलब बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम जो गई थी स्पेस, तो उन्होंने एक बार श्रीमद् भगवद गीता और गणेश जी की मूर्ति लेके गई थी। तो ये बहुत सारा डिस्कशन हुआ। मैम ने सबका जवाब भी दी। मैम, जो कि आपको पता है कि इनके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, तो ऑब्वियसली बात है इनको इंडियन फूड बहुत पसंद है और समोसे बहुत पसंद है इनको। तो और भी बहुत सारा मतलब अपने फैमिली और अपना बचपन का जो स्टोरी था उन्होंने शेयर की। मैम जो 3 भाई बहन हैं तो बता रही थी कि इनके जो भाई और बहन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सो इनको भी पढ़ना था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैक्ट जानने को मिला और बहुत ही अच्छा लेक्चर था।